Hello students, already we have done the classification of enzymes in the previous lecture in the chapter Biomolecules. आज हम पढ़ेंगे composition of enzymes in the same chapter Biomolecules. Composition में first of all we will study about the different types of enzyme और different types of enzyme में सबसे पहला enzyme है holo enzyme and second is simple enzyme. होलो एंजाइम के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और दो पार्ट्स होने के कारण ही इट्स अनदर नेम इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम. फर्स्ट पार्ट इज एपो एंजाइम जो प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन से बना होने के कारण ही इसका जो दूसरा नाम है दैट इज द प्रोटीनेशियस एंजाइम एंड द अनदर वन इज कोफैक्टर जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज स्मॉल इन साइज and it is a dilysible part of the enzyme holo enzyme. Here simple enzyme is there. Simple enzyme सिर्फ प्रोटीन से बना होता है. It has no any type of cofactor present here. अगर हम cofactor बार बार बोल रहे हैं तो what is this cofactor? How many different parts of cofactor are there and where these cofactors are used in our daily life? Let's study about this cofactor. Now if you are talking about the cofactor, तो जो cofactor है इसके भी दो different types होते हैं. One is organic and second is inorganic. Organic के again there are two different parts that is prosthetic group and coenzyme. Prosthetic group and coenzyme both are just opposite to each other as the prosthetic group is strongly attached organic cofactor and coenzyme is weakly attached organic cofactor. One is strongly attached and second is weakly attached. Okay. Now if you are talking about the inorganic, so these are the metalloproteins जिसके अंदर कुछ metal ions are present in a protein. That's why they are called as the metalloproteins. Now let's see where these cofactors are used in our daily life and where they are and what are their important components. If you are talking about the cofactors, तो एक टेबल देके रखी है जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स ऑफ cofactors हैं. उसका मेन वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं एंड व्हाट आर देयर बेसिक यूजेस. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज टीपीपी. टीपीपी जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द विटामिन थायमिन. थायमिन इज B1 और इसका मेन कंपोनेंट है थायमिन पायरोफॉस्फेट और इसका यूज किया जाता है इन द लिंक रिएक्शन इन द रेस्पिरेशन. और लिंक रिएक्शन में एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है विच कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, that is called the link reaction. If you are talking about the FMN and FAD, ये दोनों जो कोफैक्टर्स है ये प्रेजेंट होते हैं राइबोफ्लेविन B2 विटामिन में एंड इट्स मेन कंपोनेंट इज FMN का मेन कंपोनेंट होता है राइबोफ्लेविन फॉस्फेट विच इज यूज इन ETC. ETC इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जो ETC होता है इट इज इन इट बेसिकली इट इज डिराइव एनर्जी फ्रॉम द रिड्यूस्ड कोएंजाइम and its another name is Krebs cycle. Krebs cycle is useful for the respiration. And if you are talking about FAD का जो main component होता है that is riboflavin ADP which is used for both that is TCA as well as ETC. Okay, now if you are talking about NAD and NADP plus and NADP plus both are the cofactors of vitamin that is niacin which is B3 and its main components are nicotinamide ribose ATP that is adenosine diphosphate and nicotinamide ribose ATP. ATP is adenosine triphosphate. ये दोनों ही important है for TCA and TCA is the Krebs cycle. Okay, now let's study about the metalloenzyme. As we are here, we will study about the different types of enzyme. तो हमारा जो metalloenzyme है वो अभी भी बचा हुआ है. Here some metallic ions are given और वो कौन से enzyme में present होते हैं ये हम study करेंगे. सबसे पहले हम आयरन की बात कर लेते हैं. आयरन इज अ टाइप ऑफ मेटल. तो ये Fe2 plus and Fe3 plus are there. These are present in cytochrome, oxidase, catalase and perioxidase enzymes. Second is calcium ions. Calcium ions are present in SDH. SDH is succinic dehydrolase enzyme. The next is magnesium. Magnesium ions are present in hexokinase, DNA polymerase, rubisco and pepcase. Okay, if you are talking about the copper ions that are cytochrome oxidase में present होते हैं. अच्छा, आप यहाँ देखोगे यहाँ भी cytochrome है, यहाँ भी cytochrome है. Sometimes it is asked in the exam कि cytochrome में कौन से metallic ions present होते हैं. तो उस condition में generally we prefer about the iron, not the
कॉपर, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि उनके ऑप्शंस में ऐसा कुछ चॉइस रहता है कि आयरन और कॉपर दोनों होता है और अलग अलग भी देकर रखते हैं, वहां हम ऐसा वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें आयरन और कॉपर दोनों प्रेजेंट हो, बट प्रेफरेंस वी आर गिविंग ऑलवेज टू आयरन आयंस. Here next is zinc ions. Zinc ions are present in alcohol dehydrogenase, carboxy, peptidase. Next is carboxyl anhydrase. Next is chloride ions which are present in salivary amylase, that is styrene. This chloride ions are very important for the exam purpose. DNA polymerase, Rubisco, pepcase, these are also very important. Rubisco and pepcase, this is present in C3, C4 plants, and this pepcase is present in C4 plants only. Okay, now here we have studied about the different types of enzymes. Like first of all we were studying about the हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कंपोजिशन में डिफरेंट टाइप्स पढ़े, फिर कोफैक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी किए. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोफैक्टर्स और हम उसको कहाँ यूज करते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है ये हमने पढ़ा. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मेटालोएंजाइम्स. लाइक दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. Okay, today's lecture is over. Please do like and subscribe the channel, A Budding Educationist. Thank you.